हेलो क्रोशे लवर्स। देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बहुत ही जादू की चीज़ है जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। थोड़ी सी ऊन में आपकी ड्रीम गर्ल के लिए, आपकी परी के लिए कैप, हेड कैप बना के दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही इजी सिंपल है। तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी वाइट वूल। ये 1 औंस के करीब है लेकिन इससे भी कम लगेगी। और ये है रेड वूल, ये 2 औंस है, बहुत कम यूज़ होगी, अबाउट 20 ग्राम्स ईच, उससे भी कम। और उसके लिए हमें चाहिए सीज़र और एक क्रोशिया। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। इसके लिए मैंने 9 नंबर क्रोशिया लिया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना थोड़ा सा मैंने बनाकर रख लिया था। सबसे पहले आपको चेन स्टिच से रिंग बनाना है। रिंग में आप सिंगल क्रोशिया से उसको फुल करेंगे। मैंने यहाँ पर इतना बना के रखा था, लेकिन इसका मेथड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी आप देखेंगे। और ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और ये छोटा सा 6। इसके बाद हमारा वाइट थ्रेड से ऐड करेंगे। डबल क्रोशे चलेगा सारी कैप में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, शुरू करते हैं। आप भी ले लीजिए क्रोशे और साथ साथ करते जाइए। लगातार वीडियो देख के आप करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो आधे घंटे में आपका मैजिक ड्रीम गर्ल कैप आपकी गुड़िया के लिए तैयार हो जाएगा। चलिएगा। चलिए व्यूअर्स, अब ड्रीम गर्ल कैप स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ड्राफ्ट मैं दे चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया कि 5 इंचेस डाया का रेड वूल से हम एक सर्कल बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे चेन स्टिचेस से। 4 चेन स्टिचेस बनाएंगे। ये स्लिप नॉट है। 4 स्टिचेस लेंगे। 1 2 3 4। बहुत ही इजी है ड्रीम गर्ल कैप बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। बस सिंपल हुक से आप करते जाएंगे। बिगिनर्स भी इसको कर सकते हैं। आप हाथ में क्रोशे हुक ले लीजिए, वूल ले लीजिए और जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे आप करते जाइए। अब इसको हम फिल करेंगे। इसको सिंगल क्रोशे से फिल करेंगे। बाद में नेक्स्ट लाइन में हम डबल क्रोशे करेंगे। देखिए हम काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे ये भी आपको बता दूं। इसमें हम जो चेन के ऊपर ऐसे वी शेप के ये बनते हैं ना फिगर्स, इसको काउंट करते हैं। अब कितनी हमने बना ली है सिंगल क्रोशे, इससे पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हम यहाँ पर देखिए अभी 2 का स्पेस हो रहा है, हम 2 बना सकते हैं। ये हमने 2 बना लिया। 9 और 10। 10 से हमारा सर्कल ये फुल हो चुका है। देखिए अब इसको, क्योंकि हम एंड में आ गए हैं, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करना है हमने इस वी के बीच में डाल के। देखिए जो स्टार्टिंग स्टिच था ना, यहाँ से इसके वी के बीच में डाल के आपने पुल ऑन करना है। सारा यार्न अभी नहीं आया। इसको हम यहाँ से ये स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। और अब हम डबल क्रोशे करेंगे सारे। 1 2 3 डबल क्रोशे करेंगे। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे। 1, देखिए एक मैं इस वी से लूंगी और दूसरा मैं इधर वाले वी से लूंगी। ये अच्छी लुक देता है। 2 1 और ये 2। ये हमारा सेकेंड सर्कल कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हमारा था सिंगल क्रोशे का, फिर डबल क्रोशे का, और अब 1 2 थर्ड रो हम स्टार्ट करेंगे फिर से डबल क्रोशे से। सर्कल को फ्लैट शेप देने के लिए
फर्स्ट में हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, ऐसे ये, और सेकंड में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। आप कह सकते हैं डबल डबल क्रोशिया या 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए व्यूअर्स, 5 इंच का सर्कल रेडी है। दिस इज 5 इंचेस। ये सर्कल हमारा बनकर तैयार हो गया। 5 इंच डाया। अब हम ड्रीम गर्ल कैप के लिए इस यार्न को कट कर देंगे। पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, लास्ट एक का ये। इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। अब देखिए सेकंड कलर लेंगे वाइट, इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते हुए व्यूअर्स नॉट नहीं लगाते हैं, स्ट्रेट अवे होल में से निकाल के और इस वाइट वाले डबल यार्न को इस चेन में से निकाल लेते हैं। ये फास्ट हो जाता है, इसकी ग्रिप अच्छी होती है, टाइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे। फर्स्ट वाले में 4 डबल क्रोशे, उसके बाद गैप देके फिर 4 डबल क्रोशे। ये हमारा नेक्स्ट कैप का डिजाइन है। ड्रीम गर्ल कैप कह लीजिए या हेड कह लीजिए। 2 स्टिचेस देंगे इसमें और यहाँ पर आप 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक स्टिच का गैप देंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम लूप लेके pull the hook with yarn over 1 2 3 4। ये पैटर्न रहेगा हमारा इस सर्कल को कंप्लीट करने में। एंड इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। We'll add red color. Pass the hook through this space and take the yarn through the hole like this. Take the double yarn to make the knot. Again make 1 chain. This is 1 chain. Now we'll make 1 single crochet in each every space. This is the knot with single crochet in the next space. In each space we will make, here we'll make 1 single crochet. In next chain again single crochet, so first of all I made a round circle of 5 inches dia. This is 5 inches dia with double crochet stitches in each row. These are total 6 rows. 1 2 3 4 5 6. 5 rows are of double crochet and the first row is half double crochet to make after making the magic ring. Now almost it's going to be complete. In the 7th row I made
4 double crochet in one stitch and gave the gap of one stitch. Again 4 double crochet in one stitch. Next, after gap of one stitch, double crochet stitch. And this way in next row also, 8th row, I made 4 double crochet after one gap. After that, in these two red rows, I have reduced 6 stitches in one line and 6 stitches other line. Total 12 stitches have been decreased. So this has got a narrow shape for the head. Now I am going to complete it. I have completed the 14th round also. This was of double crochet stitches and we went on increasing after every 2 stitches. In 2 stitches I made 1 double crochet each, and next third stitch I made 2 stitches, 2 double crochet stitches. Similarly, you go on repeating till you end the round and get the shape of the frill. Now this shape of frill is enough. In last, I want to decorate it, not with any other material but only with white wool. It will give a beautiful look, pretty look to the hat or cap. This is your dream girl cap. Now I have added white wool for picot stitch. I will make picot stitches with crochet in the whole round, whole circle. I'll show you. How picot stitch is done, I have already given video regarding this. So I will give you demonstration of 2-3 stitches only. One stitch you have to make. Second, third. 3 stitches we have made. Now in the base stitch you have to put the crochet through, pull out the yarn and these 2 loops from we get 1 stitch, and these 2 loops we get 1 more stitch. So this is our picot stitch. We have to close it. Pull the yarn and take out the yarn from these 2 loops. Again 1 more stitch we have to crochet with slip stitch. This is the slip stitch. I show you one more time. Make 3 chains. 1, 2, 3. One, two, three. See viewers, if you are confused or forget, you can rewind the video, stop there and see the video. You can understand well. And I have also drawn mapping or draft for the same. You can read it and make accordingly. The cap will be wonderful. This is dream girl cap. So I am putting it aside, showing you picot stitch. Yes, got it. Now 1 single stitch, slip stitch. One more time I can show you. 1, 2, 3, yarn over, putting the base, cap is ready for use. Let me show you.
looking very pretty, very nice. Very easy and simple to make, crocheted with simple stitches, and not very difficult. If you like it, please share and subscribe the channel and get the notification of the next product. We will meet soon. Thanks for watching. Bye.